Hello, good evening, all of you. Very good evening. Am I audible, Soumya? Is it okay? So, okay. Thank you, all of you. So, how are you? Question paper was really okay. Thank you. Question paper aji bhi jo bhi thila OCS 24. I am so excited to tell you that the question is really mane fabulous in the sense of कि बहुत सहजिया थिला in compared to last year. But ता पूर्व very exciting अच्छे मु कही भी को type रो. I was just went through the total questions and I found कि and I found my total over explanation सहित आज मु गोटा गोटा questions भी सब जिनस कहिबी. But one thing I would like to say highlight that question जेमती जणा पड़ुछि किंतु सेमती नुह बहुत जगह कहीं जदि मु गत वर्षर क्वेश्चंस एनालिसिस करी जमती हिस्ट्री गोटे पार्ट दउतला पॉलिटी गोटे पार्ट दउतला ज्योग्राफी गोटे पार्ट देतला किंतु ए वर्ष जदि हम क्वेश्चन देखिबा किछि जिंस स्ट्रीमलाइन नाही माने आगे पूरा हिस्ट्री चलची माने जेमती आगुरु थिला एबे कोन हला गोटे क्वेश्चन देला करंट अफेयर्स तापर संगे संग इकोनॉमिक्स तापर संगे संग ज्योग्राफी तापर पुनी संगे संग पुनी करंट अफेयर्स पुनी पॉलिटी पुनी हिस्ट्री माने वेरी हैपेजेड फॉर्म रे. So this is the currently main that this is currently meant that they are going to highlight the students mind means ताकू माने entirely गोटे mind games माने करचंती पूरा question रो करची. आज हमें बुझिबा will start for the B right सेट पेपर बी जीवा आ मो संगे अछंती एथर का आज हमर टिके श्रीकांत सर आसीबे. ओके श्रीकांत सर अछंती किछ समय पे देखोची he will be there with us. ओके Srikanth sir is there, he will be with us. He be discussion part रहिबे. Get start कर दवा. And this year's rank holders, okay, rank 324 Srikanth. So वर्तमान हम start करिए प्रथम मु करिवे तापर then we'll go simultaneously. Okay, thank you Srikanth. Okay. So आज हम देखिबा कि first question question number 1 question. Okay, question number 1 जदि मु कहबी गोटे पठौछि just a second. First question देछि मु तुमको गोटे पठै दोछि just a minute. Just 1 second. Okay, first question is there this trunk and following is जो report ता आसी एटा केबे जदि हमें देखिबा कि ए क्वेश्चन रे let me change the color red is good. Okay, तो first आस्तला कि is related to मैं कहूची trunk and report is related to which of the following electoral reforms center state relations economic reforms and education. Simple एटा electoral reforms हबो एटी आंसर हैला A. Please note it केबे हितला this report was submitted in 1974 मन रखो report was submitted in 1974 right. Next okay ये जो लिंक टा जो हमें अच्छी you can we can share it ठीक अच्छी so that maximum people can get benefited right ठीक अच्छी. Next देखिबा the Campa funds are prioritized which activities. बहुत बढ़िया question. This is basically related to your environment right environment. Campa माने कौन प्रथम हमें जानवे Campa माने कौन. This is your compensatory okay compensatory afforestation fund compensatory afforestation fund management and planning authority Campa माने ठीक अछि. Compensation this is your compensation SATN compensation afforestation fund afforestation fund management and planning authority right केबे हितला. This is basically your compensatory afforestation ecosystem. Answer is your C right. एटा basically कोथ पे हितला. This is related to compensate the planting trees जोटा जो trees माने लॉस हेतले तमरा लैंड जोटा कि डिफॉरेस्टेशन और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट एक्टिविटी रे ताको कंपेंसेट करिया पे कैंपा आसला. सो एटी पूरा जणा पड़ची सी एठी मु आगुदर कहूची दिस इज ए जो एनवायरनमेंट क्वेश्चन टा एटा रिलेटेड टू योर
जदि हम देखिबा दिस इज रिलेटेड टू योर करंट रिलेटेड बेसिस रे थर्ड क्वेश्चन देखिबा द diarchil system of government was introduced in which of the following measures it is very simple diarchil system was in government of India Act C 1919 रे ठीक अछि diarchil system हेतला 1919 मसिया रे एही समय कोन हेतला प्रोविंशियल स्टेट ता दी भाग रे विभक्त हेतला वन इज योर रिजर्व स्टेट अनदर इज योर ट्रांसपोर्ट स्टेट हला diarchil system कोन करतला प्रोविंशियल सिस्टम टाकू ओके प्रोविंशियल योर गवर्नमेंट टाकू दी भाग रे करतला वन इज योर वन दे हैव जदि हम देखिबा कि गोटे हेतला तमरो रिजर्व सब्जेक्ट ओके रिजर्व सब्जेक्ट आ गोटे हला ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट या पर कोन हला ब्रिटिश गवर्नमेंट रो पॉलिसी रे बहुत सारा चेंजेस आसला अनदर इज योर ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट ओके ए दीटा होरे diarchil सिस्टम हला जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन Question number 4 which of the following is non reducing reducing sugar that is your sucrose 4 hela C that is sucrose right next C hela C समस्त नोट कर नथो बिकॉज़ डिटेल एक्सप्लेनेशन आज ये जिनसटा कहिबार कारण कि डिटेल एक्सप्लेनेशन सहित तुम मानक मु आ श्रीकांत आमे टोटल एटा तुम मानक एक्सप्लेनेशंस करबो राइट क्वेश्चन नंबर 5 आछि तमर एटा कल्चरल ज्योग्राफी मन रखो क्वेश्चन नंबर 5 हला कल्चरल ज्योग्राफी कौन देखिबा ऑक्सीडेंटल रियलम कहा को बुझाउ जेमति हमें पैसिफिक रीजन में ऑक्सीडेंटल रियलम जेमति पढू सिटी एग्जैक्टली इट इंक्लूड्स द आ भीतर देछि कि फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वर्ल्ड कल्चरल लिंक्स नॉट करेक्ट ए बडा देछि कोन नॉट करेक्ट आ भीतर राइट नॉट करेक्ट किए नॉट कर देखिबा कोन ऑक्सीडेंटल रियलम इंक्लूड्स योर वेस्टर्न यूरोप नॉर्थ अमेरिका ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड शेयर्स जर्मो रोमन हेरिटेज क्रिश्चियनिटी दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट राइट सेकंड Indic realm centered in India, shaped by Hinduism, Buddhism related to cultural tradition. This is also absolutely correct. Third, Islamic realm you are restricted solely to the Arabian Peninsula. कौन solely दे दिला 80 भूल है गला ठीक है जी for your information Islamic जो अच्छी हमारा Islamic realm that is includes not only the Arabian Peninsula it is also includes your Northern Africa a greater part of Asia Middle East that includes it totally so ये question टा इटे तमरा भूल है गला खाली Arabian Peninsula हबनी एशिया रे भी अच्छी Northern Africa भी अच्छी South East Asia भी अच्छी right so इटा हबनी ठीक है जी इटे दे दिला जो excluding North Africa and South East Asia 80 भूल है गला this is wrong अच्छा फोर्थ रे सीनो जापानीज रियलम कंप्राइज चाइना जापान कोरिया वियतनाम व्हिच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर कन्फ्यूशनिज्म बुद्धिज्म एंड ताओइज्म एब्सोल्युटली करेक्ट सब सहारन अफ्रीकन रियलम यूनिफाइड बांटू लिंग्विस्टिक इंडिजिनियस बिलीफ्स बांटू हेला तंकर जो वेरी वेरी ओल्ड इनहैबिटेड ट्राइब्स इन अफ्रीका खास करके तमर जो अफ्रीकन रीजन तमे यदि पाइबो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो डीआरसी सही पार्ट तमे बांटू अफ्रीका एक्चुअली जदि तमे देखिबो बांटू स्पीकिंग ट्राइब्स इज मच इंडिजिनियस राइट सो दिस इज आल्सो करेक्ट तांतर भूल कोटा हला नॉट करेक्ट दिस आंसर इज सी दिस इज सी टोटाली आज ये क्लास नंबर मोर गोटे जिनस हला कि सोल मोटो हला आई एम नॉट इन ए हरी समस्त जानो डिटेल रे हमें केमती जिनसटा को बुझीबा हला सो तमरा आंसर देखला बडे तम भीतर एम्बिग्यूटी रहबनी नहीं ये गलत है ये सही है बिकॉज़ एवरी ईयर फ्रॉम लास्ट 12 इयर्स आई हैव ऑलवेज फाउंड कि नहीं ये गलत था ये सही था एमती यही और लास्ट मोमेंट रे देखियो यू स्पेंट आवर्स एंड यू डिडंट फाइंड इट डिड नॉट रीच एन कंक्लूजन सो दैट इज व्हाई मु एक्सप्लेन करूची हला मैक्सिमम केसेस रे राइट मोस्ट ऑफ द 90% केस रे एक्सप्लेनेशंस रहबा जी ठीक अछि क्वेश्चन नंबर 6 which of the following next देला की statements about the CM Kisan scheme of Odisha मन रखो कितने बढ़िया क्वेश्चन CM Kisan scheme of the Odisha ओडिसा रे कोटा CM Kisan scheme right आ भीतर देछि which are not correct livelihood support under the schemes provided exclusively to the large land holding farmers एटी भूले गेला it also covers small and marginal farmers केवल लैंड होल्डिंग फार्मर्स नुह कि इट जो देला एक्सक्लूसिव लार्ज एटी भूले गेला also it covers small and marginal farmers right small and marginal farmers को एटी दबो this is एटी भूले गेला ए जिंसटा right next कोन देला your input support is given to the farmer for cultivation बिल्कुल correct कृषि विद्या निधि योजना अंडर सीएम किसान स्कीम
aims to promote agriculture education for the farmers children. Absolutely correct, this one, right? Fourth रे, the scheme is designed to be progressive and inclusive in nature. Absolutely correct. Okay, so answer it कौन है incorrect कोटा है only one. So answer is A. Please note it, this is answer A only, right? Next, arrange the following committees in chronological order. NN Bhora committee, your Rajendra Sachar committee, DS Kothari committee, Raja Chaleya committee. Choose the correct answer A, B, C, D. आ भितर कोटा देछि आम देखिबा कोटा प्रथम जदि आम देखिबा NN Bhora committee 1993 रे हेतला 1993 मसिया रे हेतला राजेंद्र सच्चर कमिटी दैट इज 2006 रे हेतला DS कोठारी कमिटी 1964 रे हेतला एंड राजा जे चलैया कमिटी दैट इज 1991 रे हेतला सो एटी कोन हबो C अस्सी कौन C D then A B एटा हला chronological order तो कोड होची C D A B answer is B for Bombay. Got my point? Answer is D हला B for Bombay. Answer is B for Bombay. कहेंगे इट सब पूरा explanation देइछ NN Bhora committee 1993 and Rajendra Sachar committee 2006 Kothari committee 64 Chaleya committee 1991. These are the detailed explanation. किछि भी confusion रहबनी, right? I am sure ए explanation तो माने देखला परे 95 more than I am just guaranteed कि 99% मु दोची तो मान कर रहिबनी पूरा हला absolutely will getting the thorough answers. There is no ambiguity over any answers because we are going to discuss with details, right? In details, which of the following is not a dye? हला आ भितर जदी हबो this is your जदी मैं आंसर लिखबा this is your anthelic acid, this one, right? Actually ए जो देला it is not a dye. ए माने समस्त हेले dye एटा जोटा हला this is an vitamin, this is an vitamin मन रखो, this is an vitamin, right? Vitamin with free contents of your carbohydrate, right? Question number 9. Question number 9 देछि consider the following statements regarding the Odisha industrial infrastructure development IDCO हला IDCO पर केते बढ़िया क्वेश्चन IDCO टा हमर कोठी अछि ए खपुरिया छकर अछि हला ए खाननगर अछि IDCO ठीक अछि वर्तमान बदे भुवनेश्वर हेडक्वार्टर हेगलन लेट्स सी IDCO देखियो प्रथमे देला भितर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अगेन देखो सब जगह रे प्राय देखो समस्त प्राय भूल कर रीजन था कि नॉट करेक्ट से दोछ हला 9 नॉट करेक्ट से दोछ नॉट करेक्ट ता भितर देखियो कोटा देला IDCO was established as a statutory cooperation by the government of Odisha 1981 absolutely correct. It serves as a nodal agency for providing industrial infrastructure and land for industrial infrastructure project across the state. Bilkul correct. The corporation's objectives include the development of industrial states, IT parks and other industrial complexes. Bilkul correct. Ye bhi correct. IDCO functions do not include land acquisition or the creation of a land bank of a major mega projects. It is do not include it. Yes, it includes IDCO functions includes the corporation facilitates private sector participation and provides project construction service. Absolutely correct. तो आ भितर कोटा देछि not correct. देखो answer is only B for Bombay. Maximum students got wrong because they do not underline. समाने कौन करते एटा को पढ़ते not correct टाको देखंतनी only correct टाको मार देबे ठीक अछि. Question number 10. Consider the following statements regarding the comptroller CAG ऊपर देला क्वेश्चन देला CAG ऊपर comptroller and auditor general CAG, right? CAG ऊपर कौन देला the office of the CAG has been modeled, right? Office of the CAG has been modeled on the basis of Advocate General under the Government of India Act 1999. 8 भूल गया. No, this is an independent constitutional body. It's not based on the your Government of India Act. Independent constitutional body, right? Independent constitutional body. This is an independent constitutional body. So this statement is wrong, right? CAG is the impartial head of the audit and account system of India. Absolutely correct, right? Then CAG can be removed by the president of the grounds of the proven misbehavior. It is proven misbehavior. No, this is this is bhul. It is wrong. They can be removed at the same like an
impeachment of judge of the supreme court जेमती गोटे judge of the supreme court जेमती जीए हला सेही भले भाबरे ये भी remove हुए judge of the supreme court and based on your parliamentary resolution based on the parliamentary please note it parliamentary resolution right parliamentary resolution right this so C is wrong we found that A and C are wrong both the term of office of CAG shall be 6 years in the date of बिल्कुल correct so answer कौन हला तमरो एठी answer हला तमरो A और C wrong हला correct देछि correct answer B and D answer is your C is the correct answer 11 number under which Mughal emperor was the office of the Muhtasib Councillor Morals included in Odisha this is your Aurangzeb B for Bombay right this is your Aurangzeb B एटी टिके क्रॉप बधे क्रॉपिंग टा करे ओके 11 नंबर रे टिके रोटेशन रे ओके ठीक अछि टिके क्वेश्चन टा एमती आसी बी सेट रे मो पढ़ी दूची क्वेश्चन नंबर 12 जदि के हु वाज द फर्स्ट लीडर टू मूव ए रिजोल्यूशन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली डिमांडिंग द यूनिफिकेशन ऑफ ऑल ओडिया स्पीकिंग ट्रैक्ट्स इनटू सेंट्रल प्रोविंस दैट इज योर मधुसूदन दास ए 12 is A मुझे लिखी दूची 12 हला तमरो A 12 क्वेश्चन हला A हला 12 हला A टिके पड़े आस जाई छी राइट 12 रो then 13 अस्सी the center state council right consider the following statement the interstate council was set up under article 263 of the constitution that is also correct this one is correct देखि नबो तमरो क्वेश्चन संगरे then Punchi commission recommended the establishment of interstate council एटी भूल गेला it is not Punchi commission it is Sarkaria commission हला this is your Sarkaria commission मन रखो Sarkaria commissions was told about that one so this one is wrong then the union home minister is the chairman of the interstate council no it is union home minister no this is your prime minister this is your PM so this is also wrong then 4.3 it discusses the matters of common interest suggest policies better coordination this is correct so आ भितर कोटा हला कि which one is correct so 1 and 4 answer is A 13 also A 13 rabi A right question number 14 which of the initiative specifically supports Himalayan glacier monitoring system this is nothing but answer is B national missions of sustaining Himalayan ecosystem 14 रहला B 14 रबी B next टिके आसी तापरे पुन ठीक हे जे ओ माय गुडनेस just a minute rotation just a minute hold on ओके ठीक अछि नेक्स्ट 15 रे 15 देखि देबा 15 नंबर क्वेश्चन तमने सब क्वेश्चन खोली के रखो से अनुसार हम डिस्कस करदा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ग्लोबल इंडस्ट्रियल पैटर्न इज नॉट करेक्ट ग्लोबल so Japan Germany and US has leaders in automobile आ भीतर एटा देला तमरो रीजनल ज्योग्राफी ऊपर क्वेश्चन नंबर 15 हला तमरो रीजनल ज्योग्राफी ऊपर राइट इट इज द रीजनल ज्योग्राफी ऊपर so this one is correct India, Bangladesh are the major centers for the textile and garment industries. Bilkul correct. South Korea, Taiwan are known for the shipbuilding heavy machinery. This is also correct. Fourth, Canada and Australia are primarily known for heavy industry other than resource based. No, absolutely wrong. This one. Canada, they are basically the vast natural resources. They are basically known for their vast natural resources. Vast natural resources. Right, vast natural resources right based on the industries such as mining forget so it answer hobe kon this is wrong he gala so a bhitor wrong pachar ji not correct pachar to answer is only D 15 hela D it mu lekhi douchi 15 D answer hela D is the correct answer 16 puni kon dela ticket dekho tomar pakare question thiba taku missei ki dekho so that it will be correct again hela
କାହିଁକିନା ଟିକେ ବେଳେ ବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟ ହୋଚପୋଚ ହେଇଯାଏ ହେଲା ତ ପରେ ପରେ ପୁଣି ଠିକ ଆସିଯିବ which of the following was the first major administrative measure taken by the Congress ministry formed in the Odisha under Hari Krishna Mahatab? This is a very good question. On 23rd April 46. Again, release of political prisoners. Hello? Answer is B for Bombay. Right? B for Bombay. 17. Which of the following best defines the Pareto optimality? Is the economics को कौन कहा जाए? This is a state. Hello? Pareto optimality. This is a state. Hello? A situations where no one can be made better off without making someone else worse off. Answer is 17 or B. Economy को कौन कहा जाए? This is an economic state where resources are allocated in most efficient manner. है Pareto को optimality जो कहती है Pareto optimality resources are used resources are used economics रा कौन कहा जाए resources are used or allocated best एटी हम लिखी दो resources are allocated to use most efficient manner most efficient manner 18 रे consider the following statements under article 124 the Indian Constitution Supreme Court judge can be impeached bilkul absolutely correct the ground for the impeachment of the judge pertains to the incapacity and proven of misbehavior this is also correct right right then a minimum of 100 MPs are required to initiate the impeachment no absolutely not 100 members from Lok Sabha 50 members from Rajya Sabha जोड़ा की दरकार है मन रख ताले जाई हम एटी देइद्रा 100 MPs no खाली लोक सभा रो तुमर 100 MPs दरकार then Rajya Sabha रो 50s so answer is this is wrong C D रे the president can pardon the judge ठीक अछि president can pardon the judge absolutely not ठीक अछि एई केस रे कोन हबो आज पर आर्टिकल 72 हबो हैला कि प्रेसिडेंट कोन हबो एंकर कंसल्टेशन करिवे कहारा अपर हाउस और लोअर हाउस रो ठीक अछि सो आंसर इट इज सी डी गलत सो आंसर इज योर सी 18 इज योर सी 19 नंबर क्वेश्चन देखिबा 18 सी हला उथरे अगेन आई एम रिपीटिंग आंसर देछि इनकरेक्ट बोली देछि राइट नेक्स्ट consider the following statement regarding the sustainable development goal SDG ऊपर देछि हला sustainable development goals ऊपर देछि the 2030 agenda for sustainable development adopted by United Nations member state in 2015 comprising 17 SDGs and 69 bilkul absolutely correct this one SDG 1 target poverty ending in all its forms everywhere using indicators like your proportions of people living below national poverty line bilkul correct this one also correct okay then the leave no one behind principle is central SDG emphasizing data collection this is also correct then sustainable consumption and production primarily SDG 14 focus on research this is also correct so it dekho all are correct right 19 all are correct 20 aswa 20 question number is section 4 of the RTI Act states that the obligations of public authorities to maintain records and public information days from the article 120A hela 20 is A 21 consider the Ramsar site upar deich right Ramsar site upar just a minute. Just a minute.
just a minute. Okay, we'll go for this one. Then 21, again, consider the following statements regarding the Ramsar sites. A Ramsar site declared as the based on ecological importance and biodiversity richness. This is also absolutely correct. Okay, this is also absolutely correct. Ramsar site super. Then Chilka Lake was the first Indian site to be added Ramsar site. This is also correct. Chilka Keoladaghana. Dita astale. Chilka Keoladaghana. Next, India has more 75 Ramsar site 2023. This is also correct. Bartaman jodi ame Ramsar sites dekhiba, it is 93 number Ramsar sites now, right? 93 number Ramsar site as of September 2025, right? So answer jodi dekhiba, it is D. D for Delhi. D. Sabu janga correct. 21. 22. The writ of mandamus is issued. 22 देखो, writ of mandamus is issued to compel the public official to perform a public duty. So answer is C. This one is C, right? C of C. 23 re consider the following statements about the Samudrayan mission. So एठी जदि आसी देखिवा कि Samudrayan missions, it is the development of the Samudrayan missions will enhance the India's capability in nuclear submarine development, right? This is also जदि हम देखिवा कि एटा भूल, एटी deep development la deep ocean, it's not the deep la deep sea upare mainly देइथला. Then the Samudrayan missions aims to develop self propelled submarine. This is correct. Then 3 re Samudrayan missions aims to explore the deep oceans for 600 meters. This is also correct. Samudrayan mission aims to boost marine tourism. बिल्कुल भी नुह है. So it कोटा गलत आसला. 2, 3 is only correct. B for Bombay, right? B for Bombay is only correct. 22B. 24. ठीक है. 24 रे आसी. Which are the following statements regarding India's aquaculture policies is correct? The Pradhan Mantri Matsya Sampad Yojana, right? Pradhan Mantri Matsya Sampad Yojana aims to enhance the fish production and boost exports. This is correct. Then the Coastal Aquaculture Authority regulates your aquaculture activities in brackish water and coastal areas. This is also correct. The National Fisheries Development Board is responsible for promoting modern aquaculture practices. This is correct. 4th ta wrong hai. Is conduct for the FOP's code for fisheries is legally is an voluntary. It's an voluntary instrument. It's not legally binded. Jodi hame dekhiba, it's an voluntary. Okay. This is your voluntary, not legally binded. This is not legally binded. This is not legally binded. So answer kon rahibo? Only 1, 2, 3 correct. A is the correct answer. 24A. 25 pre, what is the time limit provided for the making a complaint under the prevent of sexual harassment of women in the workplace? That is your 3 months. Minimum 3 months diya jaye. D for Delhi. Minimum 3 months. Next 26 re, consider the following statements about the endemic your species in India. Endemic species, the endemic species are restricted to specific geographical locations. Yes, absolutely, this one is correct. Nilgiri Thar is endemic to the Western Ghat. It is environmental question. 26 environmental question. Nilgiri Thar, yes, this is Western Ghat, bilkul. Then endemic species always fall under the IUCN critically endangered. Bilkul bhul. Hala? Endemic hela, it is in particular geographical range को बुझाए. It's not. देखो जदि हमें देखिबा कि IUCN रेड लिस्ट रे तीनटा हुए. ठीक अछि? Endangered, critically endangered और vulnerable. So endemic is not comes under your critically endangered only. ठीक अछि? So 3 गलत. So it कोटा correct हला 1 and 2. 26 रा आंसर हला A. 26A. ठीक अछि? 26 रा आंसर हला A. 27 the UPSC upar pacharchi. The UPSC mentioned in which part of the Indian Constitution? That is C. Part B. C. Okay. Part XIB 14 re.
UPSC is mentioned. 28 पचारची, consider the following statements about the delimitation and its implication in India. Delimitation and implications in India. ठीक अच्छे, या भितर यदि आम देखा, the delimitation is the process of rewarding boundaries of Lok Sabha and State Assembly constituencies to represent the changing population. Absolutely correct, this one. The delimitation commission is appointed by the President of India, and orders have the force of law, cannot challenge in any court. This is also correct. The primary objective of delimitation is to ensure that all the constituency have roughly equal populations, thereby upholding the principles of one person, one vote. Actually correct. Fourth, the current delimitation exercise based on the 2001 census, with the next one mandated after the 26. So it have next hover. It is current de dela, it bhul egla. It is last hover. This is wrong. Hala last. So it is correct. Kon hover answer A. Answer is A. 28 answer hela A. Please note it. 28 answer hela A. Which British Governor General of India formally annexed Odisha into the British Empire? Ye, that is your Lord Wellesley. Answer is C. Lord Wellesley. That is 1803. Lord Wellesley. Then 30 question about a bhalo achi. Which of the following does not match with the Nobel Prize category in 2024 literature? 2024 re, that is jodi ame dekhiba ki thik achi, that is Narges Mohammadi, peace hela, Narges Mohammadi, that is A. 80 रहिबो, 80 भूल रहिबो. ये पाइथले जो अछि ईरान रो, बेसिकली ईरान, he was fought for the democracy. तो एठी आंसर हबो नरगेस मोहम्मदी. he was 23 रे से पाइथले, मन रखो. he was getting, it not correct देछि हला, 23 रे नरगेस मोहम्मदी 23 रे अवार्ड मिलथला, awarded. ठीक अछि, she was awarded 23 रे, not, ठीक अछि, not in 24. Not in 2024. So 80 तमरो not correct माने 8. बाकी सबु ठीक अछि. This one correct. Literature रे Hank Kang से भी पाइजन 24 रे. Economics रे Darren, Simon and James 7 पाइजन. Physics रे John and Jeffrey सबु ठीक अछि. All are correct. So this is wrong. So answer कौन हला? 30 रो incorrect पचारछि. So 30 answer is your 30 रो A. 30 is your A. 31, who made the history the first black man, prathama black man to win the Oscar based costume design? That is your Paul Tazewell. This is the answer is your A. 31 answer hela tomara A. ठीक अछि, तांकर को बुक पई पाइथले Wicked. He was Paul Travell जो पाइथले तांकर को बुक पई Wicked, तांकर बुक हला Wicked is his book, से बुक पई से पाइथले. 32, arrange the following text in their chronological order. अच्छा, এটা কোন হচ্ছে of the composition. तो इथर हबो D A C D B chronological order of composition पचारछि. तो भारत नाट्य उपनिषद, देन मनुस्मृति, अर्थशास्त्र एंड मिलिंद पान्हा. सो इथि हबो A C D B. एक्चुअली यार हबो कोन A C B D. तो आर ऑर्डर कोटा अछि, दिस इज योर D. D for Delhi. So answer is your 32 रहला तमरा Delhi. 33 of C. Consider the following statements about the India's nationality NDC. India has you are committed to reduce GDP by 45% by 2030 from 2005 level. This is absolutely correct. Then India aims to achieve about 50% of cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuel source. That is also correct. Then India's updated NDC linked to the your Panchamrit announcement made at COP26. This is also correct. So answer jodi dekhibo, it is D for Delhi. All are correct. Man rakha. 33 is your D. 33 the answer hela tomar D is correct. 34 re, who has been appointed as the India's new deputy national security advisors as of August 2025? It is your Pankaj Kumar Singh. This is a very current news. 34 is your D. D for Delhi. 35 रे पचारछि simple day and united events. 3rd March एटी अछि पूरा exactly 3rd March World Wildlife Day. This is same पूरा in the chronological order रे. 7th April World Health Day, 3rd May World Press Freedom, 20th June World Refugee. So answer is your A, है ना, 35A. 36
36 रे पचारछि कोन अगेन क्वेश्चन अच्छी 36 रे व्हाट वाज द ऑफिशियल थीम ऑफ द 38th नेशनल गेम्स फिट इंडिया हला 38 फिट इंडिया 36 रे हला ए फिट इंडिया 37th colonial policies or events then the impact of Odisha permanent settlement जदि हमें देखिबा कि colonial permanent settlement that is impact on Odisha this is similarly aggravated the economic distress of Odisha peasants that is also correct this is the correct right British reorganizations and after the Maratha defeat impact on Odisha कौन पड़थिला led to the inclusion of Odisha speaking and tracts under and presidencies एटी तमे गोटे क्वेश्चन देखो सब क्वेश्चन पर किछि हार्मोनी नाही गोटे क्वेश्चन जदि करंट देला आ गोटे एनवायरनमेंट देलानी आ गोटे इकोनॉमिक्स देलानी तापर पुनी हिस्ट्री देलानी आज एई वर्षर क्वेश्चन ता समाने वेरी टैक्टफुली हैंडल करचंती सो दैट वन कैन नॉट कंसंट्रेट सब वर्ड को ता माइंड रहइबो ठीक अछि तो सेही अनुसार कट ऑफ टा बिजबो लास्ट मु अनाउंस करियो कट ऑफ टा केमती जिवो राइट सो imposition of Bengali speaking then your cause the resentment of Odisha field so इतरे सब जंक सेम पूरा अच्छी ऑर्डर रे so कौन हम A1 B2 C3 D4 E5 आंसर इज योर A 36 इज योर A राइट बहुत बढ़िया क्वेश्चन पकई चंदी 38 आसला प्योर ज्योग्राफी 38 39 रे ठीक है 38 39 रे देछि कि रिवर्स आउ या भीतर इट इज वेरी सिंपल देखो चंबल रे जानी किए चंबल रहला किए बानस चंबल रहला बानस CA3 एटी जानले देन आगुटे कोन रहला गोदावरी रहला मंजरा D4 गोदावरी रहला मंजरा A4 A3 D4 माने आंसर इज इट इज सिंपल B फॉर बॉम्बे सिंपल B फॉर बॉम्बे एठू तमे पाइ जो तापर तमे देला भीमा हला कृष्णरा कावेरी हला नोआ वेरी सिंपल हला 39 also geography river of Odisha और tributaries महानदी में जानले देखो दीटा जानी केनथे पर महानदी ओंग तमे जानला महानदी हला ओंग एटी देला महानदी ओंग देन ब्राह्मणी रहला कि शंख 3 हला 3-1 ता माने A3 और B1 ता माने कोठी आसला आंसर हला C हला 39 हला C वेरी सिंपल 39 C ठीक अछि दीटा जानी तमे करि परिबो देन सुवर्ण रेखा तमर आसिला रारू एंड योर बैतरणी आसला तमर सॉरी बैतरणी देव आउ सुवर्ण रेखा रारू 40 who were the first to issue gold coins एटी क्वेश्चन पचारछि हला एते टिके डिबेटेबल अछि who are the first to issue the gold coins मन रखो हम माने समस्त जानि छथि कुशानास बट एक्चुअली जदि तमे इन डेप्थ रे जीवो स्क्रिप्चर्स रे लिखा आइछि हला खरस्थिति स्क्रिप्चर्स रे इट वाज मेंशन्ड दैट इंडो ग्रीक्स मन रखो एटी प्रथमे कोन दिस क्वेश्चन भला बे पढो who were the first to issue the gold coins in India right gold coins को माने प्रथमे करथिले एटी मोटे जिंस लिखि दोछि as per खरस्थिति हला खरस्ति scripts हला as per खरस्ति scripts it is the Indo-Greeks who हला issued gold coins प्रथमे से माने जो मर्चेंट करे आस्थिले issued gold coins in India right gold coins in India कुशाणास माने करथिले कोन लार्जेस्ट नंबर जदि क्वेश्चन had the question be like this कुशाणास आर लार्ज नंबर रे करथिले जदि लार्जेस्ट देता then it could have answer it could have your कुशाणास मन रख जदि क्वेश्चन थांता कि लार्जेस्ट नंबर टू गोल्ड कॉइन्स को मान करते देन इट कुड हैव योर कुशानास राइट अच्छा नेक्स्ट द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस अगेन एम्पावरमेंट रिसेंटली साइंड एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ व्हिच ऑर्गेनाइजेशन टू एनहांस दिस इज योर करंट प्योरली करंट अफेयर्स दिस इज योर सी नेशनल लीगल योर सर्विसेज अथॉरिटी सी 42 देची इन द ईयर ऑफ लॉन्च आयुष्मान भारत हेतला तमर 2018 रे right 2018 रे then national skill development that is your 2015 रे right 2015 रे 2 out 3 A 2 out 3 A 2 B3 कोडी अछि चॉइसेस भीतर A 2 B3 सिंपल A आखि बंद करी के आंसर इज योर A तो मनरेगा वी नो सिंपल जदि हम जानि जने मनरेगा हला 2006 रे 2006 रे प्रधानमंत्री जनधन योजना इट इज 2014 हला जदि तमे CD भी जानि छ C1 आउ D4 आंसर तमे कोठी भी देनी दिस इज वेरी सिंपल
है करंट अफेयर्स जिनस पढ़िया पड़ो बहुत जिन जानव जिन ओके देन 43 match the following Rajput rulers and their notable battles and events राणा सांगा महाराणा प्रताप ये केवल देख एडे बड़ क्वेश्चन देखिए लगुच बेले लगे कि भाई एडे बड़ क्वेश्चन केम देचन बट इट इज वेरी सिंपल तमे देखिबा राणा प्रताप इज ओनली हल्दी घाट आउ जस्ट वेरी सिंपल देखो B1 कोठी भी B1 चॉइस देनी ओनली वन सो आंसर आखी बंद करी कि ए that is what na prelims is always that is cracked through your different of your tricks and strategies then only prelims will be easy right next 44 consider the following statements regarding the structural transformation of the Indian economy yes Gayatri pranam how are you Gayatri very nice बहुत जन देखुछ very nice बहुत बढ़िया thank you all of you good evening all of you good evening very good evening okay good evening Gayatri okay डिस्कस करिया पुनी 44 रे देछि कोन इंडियन इकोनॉमी इंडिया's economic growth since 1990 has been primarily led by the services sector with relatively smaller contribution for the manufacturing absolutely correct very good Gayatri I hope you did well in the exam भला करथु Gayatri निश्चय नहीं हे जो एथरका देखो टू रे the make in India initiative aims to increase the manufacturing sector share in GDP 25% create एडी भूल एकला this is wrong right this percentage is wrong despite rapid economic growth the share of the agricultural sector in India GDP has consistently declined while it is saved in the employment remains significant absolutely correct right these are the very currently जदि तुम हिंदू पेपर के पढुथबो कि करंट संगरे these things have been written right the phenomenon of the premature industrialization in India refers to the service sector growing without strong manufacturing base absolutely correct so answer is like 2 wrong so it कोन होबो आपने देछि करेक्ट किए दुईटा तो आंसर इज बी फॉर बॉम्बे 44 बी ओके गायत्री नो प्रॉब्लम बट आई एम रियली हैप्पी कि तमे देखुचो हला तमे देखुचो नेक्स्ट ईयर पई बहुत बढ़िया ठीक अछि ओके 45 देखिबा 45 रे which one of the following article Indian constitution provides that law declared by the Supreme Court shall be binding on all courts within the territory of India this is article 141b for Bombay this is very simple right next which of the following statements about G20 is not correct G20 by G20 रे कौन दीची this is the G20 was established 1999 it is देला not correct मन रखो G20 was established 1999 this is correct USA has hosted for the first and G20 summit of the leaders the presidency of the G20 rotates every year emitting this is correct Chile is a member of G20 बिल्कुल भूल Chile G20 रे नाही साउथ अमेरिका रे हला आंसर इज D for Delhi 46 is D 47 the foundational ideology of the Hindustan Socialist Republican Association was inspired by Irish freedom struggle Seinfeld movement this is your 47D हला modern India question टा it is your 47D तमे देखो एडी क्वेश्चन देखो पॉलिटी करंट अफेयर्स हिस्ट्री सबु केमती माने डिस्टोर्टेड फॉर्म रे वर्ष से माने पकई चंदी कोनोसी गोटे सब्जेक्ट जेमती प्रति वर्ष गोटे हेगला तमरो आगे हिस्ट्री हेगला तापरे एनवायरनमेंट हेगला तापरे ज्योग्राफी हेगला तापरे पॉलिटी हेला ए वर्ष सेमती ने सबु मिक्स अप खिचड़ी करी के पकई चंदी राइट 48 देखिबा 48 रे क्वेश्चन चला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल only to the Indian citizens and not for the foreigners of course it is your freedom of speech article 19 that is exclusively for the Indian citizens it is not for the foreigners हैला ठीक अछि ओके पिला माने एटा मन रखो this is the thing कि exclusively for the Indian citizens not for the foreigners so 48 is D for B for Bombay 48 is B for Bombay आउटे भल क्लिप हे दोछ हां 48 is your B for Bombay 49 again geography question असला geological structures कोन देछि geological structures and economic importance हला कोन दला सियोलिक्स डेक्कन ट्रैप सिंहभूम काटन छोटा नागपुर अच्छा एठी हमें कोन देखिबा सिंपल प्रथम डेक्कन ट्रैप इज बेसिकली जदि हम देखिबा डेक्कन ट्रैप ब्लैक सॉइल हला सिंस वी नो डेक्कन ट्रैप इज योर ब्लैक सॉइल right black soil means is good for your cotton and like this is your
black lava soil, black soil, black soil. It is good for your कौन black cotton and sugar cane है B. तो ये है कौन B2, B है 2, B2. Then Siwalics हमें जानी चाहिए. Siwalics basically sedimentary rocks origin. A sedimentary fossil sedimentary deposits, fossil rich deposits of sediments. So आसिला कौन A3. तापर कौन आसिला सिंगभूम काटन और छोटा नागपुर. देखो very simple. मैंने जंतु लागू जी मैंने coincidence. Coal, mica, uranium resources, then rich iron deposits. कहाँ पर होगा? कहाँ को eliminate करिवो? सिंगभूम में जोड़ी पाखरे छोटा नागपुर बोले सेठी. But मने रखो छोटा नागपुर प्लाट्यू रे variety बेसी अच्छी. So एठी कौन हबो D1 आउ सिंगभूम हला. सिंगभूम is known for your rich iron ore deposits, right? So एठी हला 4. 3 2 4 1 कोडी देछि 3 2 आंसर is your C. हला मन रख B C भितरे तमे एठी एलिमिनेट कला A आउ D को B C भितरे कंफ्यूजन रहला. तो एठी तमे मन रख सिंगभूम टा तमर रहबो rich iron ore deposits, right? And छोटा नागपुर plateau is basically your coal, mica and uranium deposit, uranium resources. So 49 is C. 50 जीवा पुणी आसी लागी से बडा प्रभु. फिफ्टी रे कौन आसला as per the global hunger index 2023 India ranks at which position globally. ठीक है. This is your 111 मन रखो. It is your C. C is the correct answer. 50 है तमरो C. कहीं की बहुत जन 105 मार्च 105 ठीक है 105 wrong. It is 2023 answer. It is your 111. Then consider the following statements regarding the ecological pyramid. एटा environment question आसला. In a parasitic food chain, the pyramid number is always upright. ठीक है it is upright. भूल है गला. It is upright है गला. It is एवढा upside down. It is भूल है गला. ठीक है कहीं की 80 तमरो रहिबे less number तापर upper. This is your less number and mass and this is your more numbers. ए जगह. Then pyramids biomass are always inverted in marine ecosystem. This is correct. And pyramids energy are never inverted. This is also correct. So answer is B 2 3. Answer is your B for Bombay. हला 51 पर answer हला Bombay B. 52 question कौन दीची. Consider the following statements about the Attorney General of India. बहुत बढ़िया question. Attorney General ऊपर कौन दीची. He is appointed by the President and holds the office during the pleasure of the President. बिल्कुल absolutely correct. He has the right to participate in the proceedings of the parliament and but without voting rights. बिल्कुल correct. He must have qualification equivalent to the Supreme Court judge. बिल्कुल correct. Then his remuneration is fixed by the parliament through the law under the article 148. एटी भूल गया. This is wrong. Answer it है only A. Correct. 53. Which of the following statements about the Chenab rail bridge? Again asla Indian geography upre asla. This is Indian geography again. Chenab rail bridge upre. Chenab rail bridge. This is an this is a cable stayed bridge. एटी भूल गया. This is not an cable stay bridge. मन रखो. This is an steel arch bridge. हला cable stay नो explanation हला steel arch bridge. हला steel arch bridge. अच्छा तापर देला कि चेन्नाब रेल ब्रिज टॉलर देन द एफिल टावर. एब्सोल्युटली करेक्ट हैला. काहे कि चेन्नाब रेल ब्रिज चेन्नाब रेल रो हाइट हैला केते यार हाइट हैला पाखा पाखी 330 मीटर. मन रखो. इट इज हाइट इज योर 300. आई एम सॉरी. दिस इज 3 पेरिस रो हैला 330 मोल्टा कहि देली. इट इज योर 359 मीटर वेयर इज एफिल टावर जोटा पेरिस रे अछि हैला माने फ्रांस रे एफिल टावर रो ठीक अछि. एफिल टावर अछि तमर केते 330 मीटर. एफिल टावर इज इन पेरिस हैला. एफिल टावर कोठी फ्रांस रो कैपिटल पेरिस रे. ओके सो आंसर एटा
करेक्ट अच्छी इट इज ए पार्ट ऑफ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट बिल्कुल भूल गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट बिल्कुल नो सेडी हम कोन देले 1 3 माइनस हे गेला 1 आउ 3 माइनस देजी क्वेश्चन कोन करेक्ट बिलो की 1 3 तमे देखो 3 सब माइनस कर देलो ठीक अछि करेक्ट तमे कहला 2 रहला इट इज सीधा जणा पड़छ 2 and 4 डी कोन देला इट इज एन वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बिल्कुल सो आंसर कोन हो डी फॉर दिल्ली चेन्नाब्रेल क्लास रे बेटा पढ़ा हिची ठीक अछि दिस इज वर्ल्ड रो हाईएस्ट रेलवे ब्रिज सो आंसर इज योर डी फॉर दिल्ली 53 इज योर डी 53 रो आंसर है तुमरा डी 2 and 4 is correct 54 रो 54 which of the following pairs correctly match regarding the schedules of the Indian Constitution sixth schedule dela sixth schedule is mainly dealing with the administration of the tribal areas in the state of Assam ठीक अछि language recognize the constitution एटी भूल गेला this is wrong seventh schedule division of powers okay between the union state this is correct eighth schedule language ऊपर करे देला कि your land reform self handling सेटी भूल गेला ninth schedule tribal areas Assam Meghalaya land reforms abolition of zamindari system एटी भूल गेला this is wrong हला एटी देखो ट्राइबल एरियाज ऑफ आसाम मेघालय आउ त्रिपुरा एटी भूल इट इज 9th शेड्यूल डील विथ योर 9th शेड्यूल कौन करे लैंड रिफॉर्म्स बेसिकली डील्स विथ योर लैंड रिफॉर्म्स एंड जमींदारी सिस्टम टिके उल्टा है जी आई एम वेरी सॉरी फॉर द कन्वीनियंस बिकॉज लास्ट मोमेंट टिके होचपोच हे जाई बट आई होप क्वेश्चन समझते थिबो एंड यू कैन हला देखो एतरे 55 pre dechi which category is under IUCN classification not directly recognized the Indian Wildlife Protection Act this is very simple again C endemic 55C hela environment question 55 hela C 55 pro question number hela C 56 acetic acid is known as aspirin this is your B 56 hela B question hela tomar eti B 56 tomar asla B hela 56 then 57 of C name and activities Madhusudan Das हला इतरे दबो आंसर मधुसूदन दास रे तमर कोन फाउंडर ऑफ उत्कल मनी ठीक अछि मधुसूदन दास रे फाउंडर ऑफ उत्कल मनी हला B2 ठीक अछि आंसर अब एटी तमर देखिबो इट इज B फॉर बॉम्बे मधुसूदन हला उत्कल मनी देन बक्सी जगबंधु खोरदा रिबेलियन पाइका रिबेलियन ऊपर फकीर मोहन सेनापति दिस इज पायनियर ऑफ द मॉडर्न Odisha that is correct Krishna Chandra Gajapati that is key role hela to answer is B for Bombay 58 re NISAR stand for this NASA ISRO synthetic aperture radar right so 58 is your B for Bombay 58 hela tamara B for Bombay 59 again 59 of C consider the following contributions and challenges service sector in India service sector upare the service sector जदि देखिबा कि इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू इंडियन जीडीपी आ पर किस समय पर मु श्रीकांत को डाकिबी श्रीकांत सर आसी सेटा बेटर रहली 65 पर 10 15 टा क्वेश्चंस करिवे द सर्विस सेक्टर इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू इंडियाज जीडीपी एंड हैव बीन प्राइमरली ड्राइवर द इकोनॉमिक ग्रोथ रिसेंट डिकेड एब्सोल्युटली करेक्ट despite is the largest share GDP the service sector share in total employment significantly this is also correct the growth in services has often been termed as jobless growth in the formal sector leading to sector's employment this is also correct digitalization of the rise of IT and ITES sector has further solidified position as a global service hub but the benefits are uniformly distributed across the workforce so 4 is correct so answer it is all of the correct D for 59 is D answer is 59 D मन रखो 59 is D for Delhi right 60 question देखिबा consider the following statements mark the assertion reasoning रे देछि Proterozoic again geography question asla in central and southern Odisha Proterozoic era is represented by the Eastern Ghats granite belt which consists of chondrolite choconite magnetite anthracite and alkalite absolutely correct this one A is correct assertion B re dela the reason dela the rocks formation are linked to the mineralization of bauxite manganese graphite and gemstone जदि वो इटा करेक्ट बट इट डज नॉट एक्सप्लेन हला ठीक अछि A and R are 2 but
R does not explain the correct A. So answer of B for Bombay. 60 is B. 60 is B. 61 leader of organization. Raja ki rohibe? All India depressed classes. Raja rohibo. Then Jagjiban Ram. Then MC Raja rohile. Then All India depressed league. So it is 3-1 it gote aschi to answer is B for Bombay. 61 is your B for Bombay. 62 B.R. Ambedkar asla tomar मन रखो ये दीटा जिनस B.R. Ambedkar related to All India depressed class Congress आउ जदि देखिबो कि जगजीवन राम All India depressed class league ये हला depressed classes जगजीवन राम थिले league को 62 the Ganjam plates of Mahadev Raja II of the Subodhya dynasty provide valuable information about the medieval Odisha history. Is in basically the genealogy and territorial extent of A. 62 is your A. 62A. One record 62 is A. 63. Which of the following statement about the Asia Cup cricket tournament is not correct? One record. ठीक है क्वेश्चन पेपर रखो से अनुसार तुम देखो है द एशिया कप इज ए क्रिकेट टूर्नामेंट प्लेड अमंग द एशियन ग्रुप ऑफ नेशंस बिल्कुल करेक्ट द एशिया कप इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द एशियन क्रिकेट काउंसिल करेक्ट द एशिया कप वाज फर्स्ट हेल्ड इन 1984 बिल्कुल करेक्ट द फर्स्ट एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट वाज प्लेड इन कोलंबो श्रीलंका बिल्कुल भूल एटी कोलंबो नो इट इज कोटी शारजाह यूएई शारजा हला इट इज योर शारजा यूएई प्रथम हेतला केबे 1984 मसिया सो आंसर इज आ भीतर देला कोन व्हिच इज नॉट करेक्ट क्वेश्चन पचाची कोन नॉट करेक्ट सब ठीक तो आंसर इज डी नॉट करेक्ट ओनली डी मन रख 63 इज योर डी 63 रो आंसर हला डी 64 असला पुनी अगेन ट्रांस हिमालय डिवीजन असला ट्रांस हिमालय सब डिवीजन ट्रांस हिमालयन कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांस हिमालय Greater Himalaya, Lesser Himalaya. देखो Lesser Himalaya is known for your, basically Lesser Himalaya is known for your hill stations. So L1 LIT, Trans Himalaya की आउसी, काराकोरम लद्दाख झास्का रेंज A3 यदि हमें देख रहे हो, है ना simple. Greater Himalaya रास्ता की Mount Everest और कंचनजंगा B4. Simple 3 4 1 2 3 4 1 2 D for Delhi. Answer is D. मन रखा. 64 answer is your D for Delhi. 65 आसी ठीक है 65 आसी which of the following statement is are correct about the Rajya Sabha? It is a permanent body, cannot be dissolved. Absolutely correct. It is a permanent body, cannot be dissolved. 1/3 of its members retired in every 2 years. बिल्कुल correct. The vice president India is the ex officio chairman person of Rajya Sabha. बहुत simple polity रे पचार very simple है ना only GS part रो ठीक है जी 4th रे ex officio chairperson बिल्कुल correct. It can be dissolved by the president during the national emergency. बिल्कुल भूल सेंती राइट नहीं है ना national emergency period करी परिबनी. So answer is 1 2 3 B for Bombay. Right 65 B for Bombay. 66 रू 66 टा अच्छी who fought the battle of Talikota. This is your Rama Raya. D हवा आंसर एबे कहा करो था battle of Talikota इतना तुम्हारा विजयनगर एम्पायर एंड योर सल्तनत डेक्कन सल्तनत विजयनगर एम्पायर लेकिन ये विजयनगर एम्पायर एंड डेक्कन सल्तनत है ए दीटा एंड डेक्कन सल्तनत ठीक अच्छे आप श्रीकांत सर आसवे तुमको एक्सप्लेन करेंगे टिल 80 पर्यंत ठीक अच्छे टिके क्वेश्चन टिके एडजस्ट करो टिके आस जाई छी ने श्रीकांत देखि यस श्रीकांत सर टिके नेबे मु टिके थकी गेलनी श्रीकांत सर तापर नेक तुम एक्सप्लेन करबे टिल 80 पर्यंत ओके यस गुड इवनिंग टू ऑल आउ मु भावुची एग्जाम समस्त भल जाइथियो क्वेश्चन तो बहुत भल थिला एथरिका गोटे चेंजेस मते देखियो मिलला जेमति गत वर्ष हम सब देइथिलु बट एथरिका मते लागुची क्वेश्चन सब डाइवर्सिफाइड कर देइची मिक्सिंग कर देइची बेसिकली हिस्ट्री पर ज्योग्राफी पर पॉलिटी एमि सब मिक्सिंग हे जी
तो पिला कौन करिए गोटे आड़ कनसंट्रेट करके मत लगुच कर पार नथिबे जेमति आमे बेलू आमे ज्योग्राफी कंटीन्यूअस पाउथि 15टा क्वेश्चन पॉलिटी तापर 15टा क्वेश्चन तो एमती सब थिला तो गोटे सीक्वेंस चलथला बट एथरे कोन मो क्वेश्चन देखुतली सब पूरा डाइवर्सिफाइड कर दिसंती तो पिला को टिके प्रॉब्लम होतो मत लागुची जा हो मो भावुची समस्त एग्जाम भलो जाइथिबो क्वेश्चन तो बहुत भलो थिला आ सार तो ऑलरेडी 66 पर्यंत करके गले टिके एडजस्ट करिवे एसो लैंडस्केप हे जाइछि क्वेश्चन जदि आपण पास थिबो तो मैच करके देखिवे 67 क्वेश्चन हम स्टार्ट करिया क्वेश्चन टा ऑलरेडी आसी जाइछि मु सेटा टिके भूल रे टिके लेखाइ नथरा बोली ठीक अछि गोटे सेकंड मु तकले एडजस्ट कर सर वन मिनिट जस्ट अ मिनिट ठीक है मैडम कर लो छी जस्ट a second can you just so that I can see it उनका देखिए ये कर लिए लास्ट ईयर टू क्वेश्चन दे थरिया टिके हार्ड अछि गत थर टिके इजी लागुतला लास्ट ईयर तो एक बार सब क्वेश्चन ना भलो अछि माने बहुत सिंपल अछि बट टिके हैपेंस बारे अछि हां सिली मिस्टेक होबार चांसेस बहुत थाए जदि आपण माने से नोट को न मार्क करथिए बहुत सारा क्वेश्चन ने नोट बहुत सारा देछि नोट करेक्ट गत वर्ष भी सेम मो द्वारा बहुत भूल हेतला कि नोट गुरा मु देखि नथिली तो मु भी बहुत पिला को भी गाइड करथिली कि सेटा सिली मिस्टेक रु दूरिया रहया पे क्वेश्चन टा को प्रॉपर पढ़िया पे जेमती 6-7 क्वेश्चन तो मु ऑलरेडी देखि सेनी जोथे नॉट करेक्ट बोली लिखा आइछि तो सेटा को जदि मार्क न करथिबे ताले क्वेश्चन ऑब्वियसली रॉन्ग होबार चांसेस बहुत अछि मतलब लाଗୁଛି ଏଟା बेसिक क्वेश्चन माने करंट ऊपर देखि बेसी पक्की जंदी नाही आगे सर हां तो हम जिबा क्वेश्चन नंबर नाउ इट इज करेक्ट 66 को जिबा नाही 7 67 को जिबा ओके करेक्ट 67 वर्तमान आसी गेला देखि नेबे 80 7 हाँ 64 गला 65 65 66 67 हाँ ठीक है हाँ 67 नो क्वेश्चन ने मैं देखिया कौन कहि छी द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फंक्शन अंडर एटा ऑब्वियसली समस्त जणा थिबो एटा प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस कारण आरा चेयरमैन जे रहंती से हमरो के रहंती पीएमई रहंती एथरे तो 67 रो आंसर कोन हबो डी नेक्स्ट कौन कहला 68 रे India's first OECM other effective area based conservation measure recognition was awarded for which reason 68 number question India's first OECM recognition was awarded for which reason our answer hobo option B ओके 68 रो आंसर होबो बी देन 69 असला ओडिशा हिस्ट्री एथरे कोन कहि से हु कमिशन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रॉक कट जैन मोनास्ट्रीज ऑन उदयगिरी हिल्स एटा समस्त जणा थिबो कि खारबळे थिले से
तो 65 रो आंसर सी 69 सॉरी 69 रो आंसर सी। सेवेंटी नंबर देखियो जदि आमे आइला ज्योग्राफी क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन इंडिया आर नॉट करेक्ट पचारची नॉट करेक्ट एटा मार्क करियो दे आर कन्फाइंड ओनली टू द ईस्टर्न घाट इंडिया ओनली देची तो एटा फर्स्ट स्टेटमेंट ही भूल गेला केवल ईस्टर्न घाट रे नो एटा वेस्टर्न घाट हमर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट भी बहुत जगह रे एटा देखा जाए। सेकेंड कौन कहला द ट्रीज शेड देयर लीव्स साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग द ड्राई समर एटा नुआ एटा होची कोडा हमर डेसिडियस फॉरेस्ट जोडा अछि सेटा ही हमर जो लीफ को शेड्स करे ट्रॉपिकल नो सेटा तो 1 and 2 दीटा को रॉन्ग हे गेला। थर्ड कौन कहिछि दे आर फाउंड इन रीजन्स रिसीविंग रेनफॉल अबव 200 cm एटा करेक्ट। तापर कहिछि इबोनी महागानी एंड रोजवुड आर कॉमन स्पेसीज एटा भी करेक्ट तो आंसर कौन हो 3 and 4 ऑप्शन ए तो 70 रो ऑप्शन ए। देन 71 को जीवा एटा साइंस एंड टेक रो क्वेश्चन 71 नंबर कौन कहला व्हाट इज द सूर्य हेलियोफिजिक्स फाउंडेशन मॉडल तो एटा साइंस एंड टेक रो करेंट वाला क्वेश्चन एटा होची कोन एन एआई मॉडल टू फोरकास्ट सोलर एक्टिविटी एटा का एटा नासा द्वारा मेड करा हिचे एटा आरो मेन प्राइमरी फोकस को रोची सोलर एक्टिविटी एंड सोलर वेदर को मॉनिटर करिया पई ए जो एआई मॉडल ता तयारी करा हिचे तो आप आरो 71 नो आंसर कोन हो जिवो ऑप्शन बी। देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 72 हिस्ट्री आसीगला देखु तो क्वेश्चन सब डाइवर्सिफाइड अछि ज्योग्राफी पर साइंस एंड टेक तापर हिस्ट्री तो पिलर माइंड को से पूरा घांटू चंदी पूरा तो हमें देखिबा कोन एटा देछि आरएस द रिलीजन इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड बाय राजा राममोहन रॉय इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर राजा राममोहन राय जो ये सब इंस्टीट्यूशन बने थे सेटा को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अरेंज कराबो सेटा कहिछि फर्स्ट ए रे देछि यूनिटेरियन कमिटी एटा के बन थिला हमरो 1821 तापर वेदांत कॉलेज जोटा अछि एटा 1825 1821 ए 1825 देन आत्मीय सभा जोटा अछि सेटा 1815 आ ब्राह्मण समाज जोटा 1828 तो हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखिया गले फर्स्ट कोड आसीबो हमरो सी तो सी टा ही गोटी रु स्टार्ट होजी ऑप्शन बी सी ए बी डी 72 रो आंसर को रहबो तले ऑप्शन बी। देन नंबर आसिला 73 इकोनॉमिक्स रो consider the following statement concerning India's multi-dimensional poverty index MPI विषय कहिछि तळे देखिबा कोन देछि करेक्ट पचारछि आंको चारटा भितरु कोडा करेक्ट कोडा करेक्ट तो फर्स्ट हम देखिबा India's MP uses health education and standard of living as dimensions aligning with the global MPI methodology एटा करेक्ट हबो। सेकंड कोन कहिछि the MPI is published by Niti Aayog using data primarily from the National Family Health Survey so data उडा से एठु ही ने National Family Health Survey रु एटा भी करेक्ट। थर्ड कौन कहला the global MPI is released annually by the United Nations Development Program and Oxford Poverty and Human Development OPHI ये भी करेक्ट अछि। फोर्थ ऑप्शन कौन कहला India's MPI includes indicators such as nutrition, school attendance and access to clean cooking fuel among others एटा भी ठीक अछि तो चारटा जाको ठीक अछि तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव।
73 रो ऑप्शन कौन होला? ऑप्शन डी। नेक्स्ट जीवा 74। 74 कौन कहला? द वन हेल्थ अप्रोच इन पब्लिक पॉलिसी रिफर्स टू। एटा गोटे देखिया बोले साइंस एंड टेक रो भी जाउची वन हेल्थ। एटा होची ऑप्शन बी लिंकिंग ह्यूमन एनिमल एंड एनवायरमेंटल हेल्थ टू प्रिवेंट पैंडेमिक्स। 74 ऑप्शन बी। तापरे 75 देखिबा ओडिशा उपरे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ओडिशा इंटीग्रेटेड इरिगेशन प्रोजेक्ट फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर इज नॉट करेक्ट? मार्क एटा मार्क करियो नॉट करेक्ट जोड़ा। एतरे कौन कहला से OIPCRA is jointly founded by government of Odisha and World Bank। एटा obviously right कि वर्ल्ड बैंक रही से सहायता नहीं छेतरे। एक नंबरटा ठीक। सेकंड कौन कहला? the project aims to improve irrigation infrastructure and promote climate resilient farming practices in selected district। ये भी राइट अच्छी। थर्ड कौन कहला? it primarily focus on large scale dam construction to increase irrigation potential in coastal Odisha। प्राइमरीली कह दिला एटा तो एटा ही रॉन्ग हेगला। प्राइमरीली एटा नुह से एक्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी की हेल्प करे एटा। तो प्राइमरीली केवल आपको ही फोकस करे नहीं, एक्जिस्टिंग जोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी सेटा को भी फोकस करे। तो ऑप्शन 3 टाइम भूल हेगला एठी। 4 कह गेला द प्रोजेक्ट सपोर्ट फार्मर्स ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। एटा ऑब्वियसली करेक्ट। तो ऑप्शन 1, 2 एंड 4 करेक्ट हेगला। से पचार नॉट करेक्ट तो ऑब्वियसली ऑप्शन कोडा है जो 3 टा। तो 3 कोड होची ऑप्शन सी रे। तो 75 रो आंसर है जो ऑप्शन सी। तापर हमको नेक्स्ट जीवा 76 को। 76 रे सबुटू इजीएस्ट क्वेश्चन ओडिसा रो वैदेही विलास किए लिखिचंती? एटा समस्त जानिथिबे कवि सम्राट उपेंद्र भंज। नेक्स्ट 77 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया नॉट करेक्ट? एठी भी देखिए मार्क करियो नॉट करेक्ट। बायोस्फीयर रिजर्व जो अच्छे इंडिया जस्ट 4टा स्टेटमेंट देछि ता भीतर कोटा करेक्ट नो सेटा से पचारछि। फर्स्ट कोन देला ग्रेट निकोबर इज वन ऑफ द डेजिग्नेटेड बायोस्फीयर रिजर्व। एटा ऑब्वियसली करेक्ट। सेकंड कोन देला नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज स्प्रेड ओवर कर्नाटका केरल तमिलनाडु। एटा ऑब्वियसली करेक्ट। 3टा जगह रही से जाइछि नीलगिरी बायोस्फीयर जोड़ा कर्नाटका केरला एंड तमिलनाडु। तो ये 2 नंबर स्टेटमेंट भी करेक्ट अछि। थर्ड स्टेटमेंट कौन कहला देयर आर नो बायोस्फीयर रिजर्व्स इन हिमालय रीजन। नो आसिला माने तो एटा को आगे फोकस करिवे। एटा ऑब्वियसली रॉन्ग। फोर्थ कौन कहला सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। एटा ऑब्वियसली राइट। तो कौन कहला 1, 2 एंड 4 करेक्ट। ऑप्शन सी 77 ऑप्शन सी। 76 रो कोन ऑप्शन सी थिला। नेक्स्ट जीवा एटी टिके बदे पडे ये जाइछि मु टिके भी एटी करि होछि। एटी क्वेश्चन पजे छि नॉट करेक्ट है। ठीक है टिके हड़बड़ एटी नॉट करेक्ट है। नॉट करेक्ट जदी एटी हबो आंसर ता एटी हबो एटी तमरो 3 हबो ओनली 3 हला। सेकंड आंसर करेक्ट पूरा एक्सप्लेनेशन करले माने एक्चुअली सेटा एग्जाम हॉल रे भी सही किछटा पूरा ही जाए कि नॉट करेक्ट करेक्ट थिला। सो एटी एक्चुअली तुम्हारा दिस इज योर ए नॉट करेक्ट माने एक्सप्लेनेशन सब है ना आंसर ता ओनली 3 सॉरी हां ए बड़ा ही मिस्टेक हुए एग्जाम रे। 1, 2, 4 जोड़ा करेक्ट हम मार दी छै। एटा 1, 2, 4 करेक्ट बट से पचार नॉट करेक्ट तो ऑप्शन 3 तो ऑप्शन कोडा जिवो ए। तो एमती बहुत सारा मिस्टेक है मोर एठी भी भूल हो माने एटा न एटा सब राउंड कर रखिए एग्जाम हॉल क्वेश्चन पेपर ही एटा राउंड कर दे फर्स्ट जा फल कि आपन कला बेले भूल हबन सेटा। 77 गला 78 को जीवा हमें। 78 जो एटा इजी क्वेश्चन अछि मिशन कर्मयोगी लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एम्ड एट। एटा समस्त जानते मिशन कर्मयोगी जी भी सिविल सर्विस पे पढुचंदी कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट।
ऑप्शन बी 78 ऑप्शन बी नेक्स्ट 79 कौन कहला इन इंडिया द थ्रेटेन्ड स्पेसीज रिकवरी प्रोग्राम अंडर एनबीएपी टारगेट स्पेसीज दैट आर कौन कहला सी इन इंडिया द थ्रेटेन्ड स्पेसीज रिकवरी प्रोग्राम अंडर एनबीएपी टारगेट स्पेसीज दैट आर कोड़ा कोड़ा से कही लोकल एक्सटिंग बट ग्लोबली कॉमन एटा हबनी से बेसिकली जो हमरो थ्रेटेन्ड स्पेसीज गुडा अछन सेटा हबो स्पेसीज विथ नैरो जियोग्राफिक रेंज एंड डिक्लाइन पॉपुलेशन 79 ऑप्शन सी तापर नेक्स्ट जिबा हमें हिस्ट्री रो क्वेश्चन नेक्स्ट कौन कहले से व्हिच मोगल एम्परर अपॉइंटेड फर्स्ट सेपरेट सुबेदार ऑफ ओडिशा एंड इन व्हिच ईयर डिड ओडिशा बिकेम ए सेपरेट सभा तो एटा हबो कोडा ऑप्शन ए अकबर 1593 80 ऑप्शन ए 80 पर हमें जीवा 81 को ये हला करंट अफेयर क्वेश्चन रिसेंट जो सबमिट सब होई छि ता ऊपर ये सब जंग सीक्वेंस अरेंज करके से ऑलरेडी देई छि 81 देखिया गले ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर लोकेशन कोडी यांकर सबमिट सब होइतला तार लोकेशन को जगह रही छि G7 2025 रो G7 कोडी हेतिला तो ये ऑलरेडी कनाडा रे हेछि तो ए जो कनान स्कीस जोडा अछि तो एटा हेई सेही जगह रे हेछि एटा ठीक अछि नाटो जो हेतिला से नेदरलैंड द हग रे एटा भी हेछि एटा भी ठीक अछि एससीओ 2024 इस्लामाबाद रे हेतिला एटा भी ठीक अछि G20 समिट 2025 जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका सेठी भी जोडा हेतिला एटा भी ठीक अछि तो चारटा जाको सीक्वेंस बराबर अछि तो ऑप्शन ए रे देछि A1 B2 C3 D4 81 नो आंसर कोन होइजिवो ऑप्शन ए तापरे 82 को जिबा हमें 82 रे ज्योग्राफी क्वेश्चन देला देखु छ तो हिस्ट्री करंट अफेयर ज्योग्राफी सीक्वेंस पूरा कंटिन्यू चली से 82 क्वेश्चन कौन कहला द एल निनो फेनोमेनन इज एसोसिएटेड विथ एल निनो कहा सहित संपृक्त अछि से पचार छी एटा समस्त जानि दिबे ज्योग्राफी जे भी पढुथिबे वीकेनिंग ऑफ मानसून इन इंडिया एल निनो ही हम जो टाइम रे एल निनो आसे हमर मानसून टा को से वीक कर दिए तो 82 रो ऑप्शन कोडा हिजो ऑप्शन ए नेक्स्ट कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 83 ये आइला करंट अफेयर्स रो कौन कही व्हिच कंट्री डिड इंडिया डिफीट इन बोथ मेंस एंड वुमेन्स खो खो वर्ल्ड कप 2025 फाइनल्स जो एबे रिसेंटली जोटा जाइथिला खो खो वर्ल्ड कप हेतिला तो इंडिया बोथ मेन एंड वुमेन दीटा जाको विन करथिला तो सेतरे से हरिथिला काहाकू ऑप्शन ए बांग्लादेश तो बे सारा आसीबे नेक्स्ट कंटिन्यू करिया भाई हां ठीक अछि थैंक यू विकेन सर तो लास्ट वर्ड मु पुन डाकिबी हमरो जो जतले में कट ऑफ एनालिसिस करियो सेतर मु पुनी मु कहिबी ओके ओके बस एठी मु गोटे जिंस कहिबी कि 84 रे जो क्वेश्चन टा अछि अच्छा 83 गला हां एठी 72 रे दीटा क्वेश्चन मु जोडा देखुची ग्रेस मिलियर अछि दीटा क्वेश्चन रे जोडा कि मु कहूची गोटे हला 70 दीटा जगह मु देखिची ग्रेस मिलियर अछि बहुत जगह रे just I was just looking after that one just a minute question number 84 रे ग्रेस मिलियर बहुत अच्छे चांसेस काहे कि एटी मु क्वेश्चन टा कहूची तुमको क्वेश्चन नंबर 84 रे अच्छी LAL Basam the wonder was that was in India that is a 1 ro B हला 1 रो B देची 1 रो B then Donald A. Smith India as the secular state that is correct India as the secular state B that is a 2 is A eta A rohibo 2 is A then Rudloff and Rudloff he has basically did with in pursuit of Lakshmi this was in both highlight thila eta both jagar bharta Rudloff kara and Maurice Jones he was basically in government and your politics of India that is C तो आंसर हम कौन हम 1 2 3 4 रो एक्चुअली हवा कथा बी ए देखो एटी आंसर हवा कथा ए रो
एटी कहीं के भूल है मुझे कहूँ बी ए ठीक अच्छे 1 2 3 4 रो बी ए डी सी ठीक अच्छे अच्छा सॉरी एटी बी ए डुडब इन परस्यूट ऑफ लक्ष्मी डब्ल्यू एस मोरिस 4 सी डी सी बी ए डी सी आई एम सॉरी बी ए डी सी ना ये करेक्ट अच्छी आई एम सॉरी दिस वन इज करेक्ट 98 रे तुम ग्रेस मिलियम तुम कहीदेवी है दिस वन इज करेक्ट दिस वन इज करेक्ट सो आंसर इज योर 84 इज ए 84 इज ए 85 रे करेक्ट अच्छी है 85 रे 15th फाइनेंस कमिशन रिकमेंड द हेल्थ एक्ट फोकसिंग ऑन it is urban rural health infrastructure, that is D, T for Delhi, urban rural, right? 86 रे the chola navy chola kingdom navy was known for its expedition against Indonesia and Sri Lanka, that is C. Basically Indonesia किए थे श्री विजय किंगडम है इंडोनेशिया किए थे श्री विजय किंगडम ठीक अच्छे एटा थे इंडोनेशिया श्री विजय किंगडम 87 PM गति शक्ति नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी टारगेट्स इंटीग्रेशंस ऑफ रोड रेल पोर्ट एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर गुड एटा बहुत इजी क्वेश्चन पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन टा पीएम गति शक्ति राइट पीएम गति शक्ति इज डायरेक्टली रिलेट टू योर रेल रोड पोर्ट एंड हाईवेज एयरपोर्ट सब जिनस बी फॉर बॉम्बे what differentiates India's long emission development agency LED NAPAC, that is your it provides sector specific decarbonization, that is your B for Bombay 88. 89 mustard gas is basically 2,2 dichloroethylene एटा तमरो आसी गोटे केमिस्ट्री रे क्वेश्चंस 89 is C. 90 देखिबा 90 number question, read the following statement, choose in humid tropical regions rural settlement आसीगला तमरो एटा ये ज्योग्राफी आसीगला राइट तमरो ह्यूमन ज्योग्राफी क्वेश्चन आसला सेटलमेंट ज्योग्राफी रो ह्यूमिड रे आसला कि इन ह्यूमिड ट्रॉपिकल मैंने करेक्ट इनकरेक्ट के ट्रॉपिकल रीजन सेटलमेंट्स अपॉन टेक ऑफ कॉम्पैक्ट विलेजेस दिस इज करेक्ट राइट स्टेटमेंट 2 रे आइसोलेटेड फास्टेट्स आर मोर कॉमन इन डेंसली पॉपुलेटेड नो इट इज बेसिकली कॉम्पैक्ट सेटलमेंट देला कि densely populated rice growing regions of India isolated from side no densely populated कौन रहइबो is compact settlement एटी भूल हेगला हला densely populated रे एटी isolated हबनी एटी हला compact settlement मन रख this is your compact settlements right compact settlements एटी रहइबो then 3 रे physical barriers like mountain and deserts can be led to the clustered settlements absolutely correct clustered settlement एटा दबो 4 रे settlements morphology linked to the agriculture system ownership, that is also right, this is also correct. Okay, systems and land ownership. So 1 3 are correct, 2 is wrong. Answer is B for Bombay. 90 is B, right? 91 the basic foundation of the global economic governance in the post Second World War 1 led to by the various institutional framework, which is following correct रहा तुम्हारा ऑप्शन A and B ठीक है ऑप्शन ए एंड बी अच्छा मुझे पुणी श्रीकांत सर को पुणी ट्रांसफर करछि ठीक अछि सो लास्ट है खाली 98 टा सर एटा कहि देबे कि 98 टा 98 रे आपन टिके ग्रेस हो हम से हिसाब रे आछि बाकी 92 रे आपन एक्सप्लेन करले ओके 92 कोन कहि छी ये हमरो economics question with respect to inflation in the Indian context consider the following statement inflation ऊपर कहि से retail inflation measured by the consumer price index is primarily metric used by the RBI for monetary policy formulation एटा एक नंबर ऑप्शन टा ठीक अछि से पचारछि कोन which are correct एटा देखियो एटा मार्क करिवे सेकंड कोन कहला core inflation includes volatile components like food fuel prices providing a more stable measure of underlying inflationary pressures एटा ही भूल कहला सी ऑप्शन 2 टा भूल अछि थर्ड कोन कहले supply side factors such as monsoons affecting agricultural output and global crude oil prices play a significant role in India's inflation dynamic third option right अछि fourth option कोन कहला headline inflation refers to the total inflation in an economy including volatile components such as food and energy prices एटा भी ठीक अछि
तो ऑप्शन कोटा कोटा हमर करेक्ट अछि 1 3 एंड 4 ऑप्शन बी 1 3 एंड 4 92 आंसर विल बी ऑप्शन बी नेक्स्ट कमिंग टू 93 नंबर क्वेश्चन एटा हला पॉलिटी क्वेश्चन कोन कहै छै से ए कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू फॉर्मुलेट फंडामेंटल ड्यूटीज आफ्टर इमरजेंसी इन 1976 इट वाज हेडेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटी ए समस्त एटा जानि थिबे फंडामेंटल ड्यूटी जो फॉर्मुलेट हेतला से को कमिटी ये करथिले सेटा को सरदार सोरन सिंह 93 ऑप्शन सी then coming to next question that is 94 ये साइंस एंड टेक रो क्वेश्चन आसिला कोन कहै छी वेव लाइक कैरेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज प्रूव्ड बाय वेव लाइक कैरेक्टर जोड़ा कहला वेव लाइक कैरेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कहा द्वारा प्रमाणित हुए सेटा द आयोनाइजेशन ऑफ एन एटम द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन मेटल वायर the deflection of electron beam by electrical plates last option the difference pattern of electrons scattered from a crystalline solid option D is the answer 94 answer will be option D then coming to question number 95 अबे हिस्ट्री ऊपर आसला क्वेश्चन किछि नेशनलिस्ट वुमेन को नाम देछि सेतरे तांकर एक्टिविटी कोन अछि मैच करिया कहिछि सरोजिनी नायडू उषा मेहता अरुणा असफ अली डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन तो आम जदि देखिबा एटा सरोजिनी नायडू ये हम लेट द सल्ट सत्याग्रह दर्शना एटा हम आपण 3 उषा मेहता हबे ऑप्शन 4 दैट इज ऑपरेटेड सीक्रेट रेडियो ड्यूरिंग क्वाइट इंडिया मूवमेंट ये 4 then Aruna Asaf Ali a leader of the underground movement ये होची ऑप्शन 1 and Dr. Lakshmi Swaminathan ये ऑप्शन 2 तो देखिया गले हमर ऑप्शन कोडा हो आंसर विल बी आंसर बी 3412 95 रो ऑप्शन बी तापर कमिंग टू 96 करंट अफेयर क्वेश्चन अछि recent current affair the 2025 Colombia Cambodia and Thailand border conflict was primarily triggered by एटा एबे का न्यूज recent current affair जे पढिथिबे सु करथिबे एटा answer is the historical dispute over pre-Bihar temple and the surrounding territory 96 answer will be option B then coming to question number 97 the term seamless web reference to the interconnectedness of different parts of Indian constitution was used by which of the following authors so it our answer Granville Austin option A 97 option A coming to next question 98 which of the following combination correct with regarding the social welfare policies and the year in which it was introduced एटा एक्चुअली ग्रेस मार्क दिया हो कारण तार क्वेश्चन ही माने पचारची गोटे ऑप्शन देई अलगा कथा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन आर करेक्ट बट से ऑप्शन देई छी अरेंज करिया पे तो एटा मोस्ट प्रोबेबली ग्रेस मार्क समस्त को मिलिबो एटा सर भी एटा ही कहउथले कि तार ऑप्शन ही गलत देई छी कॉम्बिनेशन करेक्ट पचारची कोटा माने कोटा का कोई ईयर सहित कॉम्बिनेशन ठीक अछि कि नहीं बट ऑप्शन देछि अरेंज करिया पे तो एटा ही ग्रेस मिलियो समस्त को तो नेक्स्ट क्वेश्चन 99 को जिबा अच्छा इतरे मो टिके इंटरप्ट करछे इतरे मो गोटे इंच कहउछ जोडा कि एबे कहले हम 98 टा कहले हां इतरे एक्चुअली कोन दिछि क्वेश्चन रे क्वेश्चन तो तमरो एतरे हार्मोनी नाही जेंति कोटे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कोटे देबा कथा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ता लिखिनी so that is what fine it question confusion as so most expected 98 question ने तमन को ग्रेस मिलिबो एटा हां 99 को जिबा हमें with reference to the challenges of urbanization in India consider the following statement
लास्ट को कौन पचारची व्हिच आर करेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऊपर नहीं कि को ए चारटा स्टेटमेंट भितर कोडा कोडा करेक्ट अछि फर्स्ट कौन कहला रैपिड urbanization often leads to strain on existing infrastructure such as housing sanitation water supply and transportation एटा obviously correct अछि second कहला the growth of the informal settlement slums in a common consequence of unplanned urbanization due to unaffordable formal housing एटा भी ठीक अछि थर्ड कौन कहला urban areas typically experience higher rates of unemployment compared to the rural areas leading to increased pressure on social services एटा ही भूल कहला fourth कही smart cities mission aims to promote sustainable and inclusive cities by applying smart solutions and leveraging technology एटा obviously ठीक अछि तो 1 2 and 4 तीनटा ऑप्शन करेक्ट अछि से करेक्ट पचारछि तो 1 2 and 4 ऑप्शन सी will be the right answer 99 option C. Next, last question, 100 number. Who was the founder of Lingayat sect? एटा maximum पिला जानी थिबे जे पढ़ी थिबे बसवा ऑप्शन बी 100 नंबर आंसर होची ऑप्शन बी बसवा तो एटा थिला हमर लास्ट क्वेश्चन तो मु बाबूजी समस्त एग्जाम बहुत भलो जाइथिबो क्वेश्चन बहुत भलो थिला आगो पे गत वर्ष आमे सब देइथलु जेमि थिला ए वर्ष भी सेमति अछि बट टिके ट्रिकी करि देइछि क्वेश्चन कहबा गले एथरिका क्वेश्चन गुडा बहुत डाइवर्सिफाइड अछि आपण गोटिए डायरेक्शन में जाई परिबेनी यानी आमे गोटे थर देला बेलु लास्ट ईयर पॉलिटी करूथलु तो पॉलिटी सल्ला पर नेक्स्ट सेक्शन को जाउथलु एथरा सेमिति नै खोजी खोजी करिया पडुची पॉलिटी कोठी रहि गेला कोठी ज्योग्राफी रहि गेला तो सेटा गोटे इश्यू आसी पिलांगु आउ क्वेश्चन भलो थिला एते भी हार्ड नाही कि करि हबनी बिल्कुल अच्छा बेटा थाओ आज्ञा सर तो वर्तमान हमें डिस्कस करिबा कि केमती जीवो वर्तमान कट ऑफ तक कोन जो व्हाट विल बी द कट ऑफ राइट Sir. विल टॉक अबाउट द कट ऑफ व्हाट विल बी द कट ऑफ राइट कट ऑफ ता जीवो ऊपर कट ऑफ ऊपर हम कहबी कि वर्तमान जदि मु कट ऑफ कथा कहबी कट ऑफ ए वर्ष रे कोन जो व्हाट विल बी द एग्जैक्टली कोन रहइबो कट ऑफ ऊपर सो very clearly कट ऑफ ऊपर एथर का मु आई एम वेरी मच श्योर क्वेश्चन रो जो स्टैंडर्ड देखि कि जो बड़ा आसी बहुत जेतु देख ए यार ऊपर मु काहे की कहूची कट ऑफ ऊपर काहे कि ना क्वेश्चंस वर्तमान जो बड़ा आसी छी दिस इज जो बड़ा लागु छी कि माने हमको कि सहज अछि किंतु जेहेतु तमरो अच्छी कम नंबर सीट पाखा पाखी केते अछि 250 समथिंग 200 समथिंग अछि ओके तो वर्तमान मुझे कैटेगरी वाइज कर दूच केमती रहइबो जनरल हला माने यू आर केते रहइबो कट ऑफ केते रहइबो हला जनरल देन सेकंड रहइला हमरो योर एससीबीसी राइट देन योर एससी एंड फोर्थ रे एसटी एटा मेन हमरो रहइबो पारा भी केते रहइबो हला ठीक अछि कट ऑफ मार्क्स केते रहइबो मार्क्स sorry marks ta sorry minute just that's okay अच्छा ना इट्स ओके हां तो एठी हम रहिबो केते रहइबो मार्क्स तो जनरल रो पाखा पाखी जीवो 95 रु 100 राइट 95 रु 100 जनरल नोची हला 95 रु 100 नोची ठीक अछि 95 रु 100 जनरल जीवो एठी जीवो मार्क्स एठी मु लिखि दोछु मार्क्स अबाउट अलॉटेड मार्क्स हला तो ता माने केतरा क्वेश्चन ला ता माने नंबर ऑफ क्वेश्चन ता केते रहइला हम केते रहइबा पाखा पाखी सेकंड केते रहइबो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जदि हम देखिबा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पाखा पाखी ता माने 48 टारु जहार 48 टारु 50 टा करेक्ट थिबो माने टोटल ऊपर मु नेगेटिव कथा कोनी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव करेक्ट तो केते रहइबो नंबर ऑफ क्वेश्चंस माने 48 रु 50 क्वेश्चंस जनरल अच्छा यार केते नबा
90 ରୁ 100 मुझे भी एससीबीसी बिकॉज वर्तमान जहाँ देखुची लास्ट ईयर जो मार्जिन टा तम बैच जो आसला सेटा बहुत क्लोज मार्जिन रे रही एक्चुअली हैला क्लोज मार्जिन तो एटा केते रहइबो पाका पकी 90 टू 100 माने 45 प्रूफ नॉर्मली हैला 45 प्रू 50 अच्छा एठी मो अटिके भूल देले एठी हायर साइड रे एठी 105 रखुची मु दिस इज योर 105 95 प्रू 105 मु रखली ता माने योर पाखापाखि 52 रू 53 लेट्स से 52 टू 53 हैला 52 और +1 एथरे म रखि परिबी से एससी रे जदि म देखिबे एससी रे रहइबो तमरो पाखापाखि 75 मु दबी हैला 75 रू 76 भितरे काउंट रहइबो हैला हायर साइड रे तोर पाखापाखि रहइबो ता माने केते रहउची क्वेश्चंस पाखापाखि 37 रू 38 क्वेश्चन तमर करेक्ट रहबा दरकार नंबर ऑफ क्वेश्चंस आई एम टॉकिंग अबाउट अगेन एठी तमर रहउची केते से जदि तमे देखुचो जनरल कैटेगरी अगेन इट इज 48 रू 52 क्वेश्चन ठीक थिवा दरकार आई एम टॉकिंग अबाउट ताने मार्क्स केते 95 रू 105 कटक हला 52 53 हायर माने लोअर 48 आ हायर 53 काहे ना एबर्स जदि हम देखिबा इट इज 38 क्वेश्चन आस्त्रा सहज निश्चित रूपे 10 टा बढ़ियो काहे कि अधिका जीवो बिकॉज ऑफ योर लेस योर सीट हला वैकेंसी लेस अछि बोले एससी विसर गला 90 टू 100 एससी रो 75 टू 76 नंबर ऑफ क्वेश्चन सही अनुसार मु ताको कैटेगराइज करली एसटी जदि देखिबा पाखा पाखी 45 रू 55 भीतर जीवो जोड़ा गेस कहीं टिके सेतरे तंकर रहे कम परसेंटेज रहे तो एते नॉर्मली केते रहबो पाखा पाखी हम जदी कहबी कि मैक्सिमम 25 टा क्वेश्चन 25 टा रू 27 टा क्वेश्चंस मु धरि हला 23 टा रू सॉरी 23 टा रू 27 टा क्वेश्चंस भीतर मु धरिबी 23 रू 27 नंबर ऑफ क्वेश्चंस सो अगेन आई एम रिपीटिंग कट ऑफ मार्क्स ऊपर अगेन आई एम रिपीटिंग दैट जनरल कैटेगरी हमर जाउची 95 रू 105 टू बी वेरी फ्रैंक दिस ईयर द नंबर ऑफ सीट्स आर लेस that is why we are expecting it is more 100 cross करिवो 95 रो माने लोअर लिमिट 105 95 रो 105 भीतर जहार भी क्वेश्चंस रहउची माने आंसर ता हला माने करेक्टनेस रहउची जति माने नेगेटिव कला परे ता माने 48 टू 52 क्वेश्चंस आर ठीक तो जति 90 बहुत सारा डायरेक्ट कोड पचारची माने स्टेटमेंट भी अछि जेति कि तार अधिक हमर डायरेक्ट क्वेश्चन पचारची जोटा कि कट ऑफ हाई जिबार भी चांस बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली कट ऑफ हाई जिबार चांस अछि तो हम एटी देखले 95 रो 105 जनरल कैटेगरी यू आर एटी ऑफसी 90 रो 100 एससीबीसी रो आउ से योर एससी रो ऑफसी 75 रो 76 मार्क्स जोतरे क्वेश्चन है 37 38 एसटी रो 45 रो 55 सो वर्तमान जदि हम देखिबा कि दिस इज द करंट ईयर रो एटा 2000 माने ओसीएस 24 पय एटा प्रीलिम्स पे प्रेडिक्शंस वी होप फॉर द बेस्ट निश्चित रूपे भलो रहिबो ओके सो एठी हमें क्वेश्चंस आज मु सेशंस आज एठू एंड करबा एंड मु जहां भी विश्वास करछु जत्ते भी टाइम रहिला किछि ना न भाबी कि जहार तमे देखुछो कि एई बढिया भाबरे तमर जाईची हैला जनरल यूआर एससीबीसी एसटी एससी और एसटी रो जहार एमती जाईची वर्तमान पूरा एकदम न विलंब न करी तमे प्रिपरेशन आरंभ करनियो ओडिशा सिविल्स रो जोटा अछि एटा कटक रे it is we are providing your offline coaching your online sangre भी offline as well also दिया होची and qualitatively we are जदि देखिबो कि classroom students ऊपर Srikant and there are many more students your Maitri and they are all at the maximum classroom students and we believe in your quality of your providing the quality education खास करके मेंस वर्तमान सबुट मु कहबी मेंस में बिल्कुल समय नष्ट करनी मेंस हला तमर सिलेक्शन राउंड हला तो डेफिनेटली मेंस तो बहुत सारा केयर नेबा को पड़े एंड वी आर देयर टू हेल्प यू देयर डेफिनेटली सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट मेंस भाई ओके श्रीकांत किछ कहब चाहिबो यू कैन से अबाउट दिस वन ओके देन वी विल कल्मिनेट द सेशन प्रीलिम्स पर बेसिकली टाइम वेस्ट करिया कथा नुह कारण टाइम बिल्कुल मिल न था मेंस पाई जेमिति कि हमें जानि कैलेंडर लिखाई जी जनवरी रे मोस्ट प्रोबेबली मेंस करिवार चांसेस अछि तो टाइम वेस्ट न करिकि जते जल्दी हबो आपण मेंस पे स्टार्ट कर दियंतु गोटे दिन 2 दिन रेस्ट करिकि तापरे कंटीन्यूअसली मेंस पे स्टार्ट कर दियंतु जा फले कि आपण बैक रहिबेनी वैकेंसी भी कम अछि आ क्वेश्चन दिन दिन कंपटीशन बढ़िया लागि जदि सेति कि ये रे मेहनत आपण न करिवे ताले जो रेस रे माने आपण कंपटीटर को बीट करिया बहुत कष्टकर हे जिवो तो सेते लागि गोटे 2 दिन रेस्ट करंतु प्री परे बहुत सारा मेहनत हेतो मु जानि छी मु भी सेटा करिछि
गोटे दिन रेस्ट करके कंटिन्यूअसली लगी पड़ू मेन्स आउ दी मास 3 मास जिते भी टाइम मिलूँ तो डेडिकेटली देकी मेन्स मेन्स पर्यंत एकदम फुल स्पीड चलतु ताकि आप मेन्स भल जाओ सर So thank you all of you. Thank you all of you. जहाँ भी जहाँ किसी queries रहे you all can directly access to me through your app and you can reach to me over the phones number जहाँ भी अच्छे. Okay, and मुझे एबी भी कभी मेंस इज सिलेक्शन राउंड प्रीलिम्स सरीगला जहाँ भी जो ही कोर्स आसुची जितने की स्कोर आसुची काला विलंब न कर किसी दिन रेस्ट नहीं की जमती सेकंड कहला कि सही अनुसार माने you start your preparations without wasting your time, right? So thank you all of you for your having patience and stay with me. We'll again meet. Thank you so much. Thank you everyone and all the best. All the best. Thank you. Thank you.